Hello everyone, welcome again to GIS Pathshala. So the next topic is finding the square root by the long division method. Okay, we have to find the square root of the following number by the long division method. So let me start how to solve it. So I'll take one example. First, we have to find the square root of 2304. Okay, so first of all, do like this. ओके सबसे पहले हमको पैर बनानी है. वी हैव टू मेक द पैर फ्रॉम द राइट साइड. 1 की प्लेस है वहाँ से 2 की पैर. ओके 1 and 10 एक पैर हो गई. 2 3 अनदर पैर. तो ऐसे हमें पैर बना लेनी है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, हमें स्क्वायर एज्यूम करना है. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25. सो 25 अगर हम लेंगे तो 23 से बढ़ जाएगा. सो वी हैव टू टेक 4 4s are 16 because 5 5s are 25. We cannot take 5 5s are 25, so we have to take 4 4s are 16. So we will take 4 4s are 16. Okay, now if we do the subtraction of these two, 23 minus 16, 23 minus 16, so we will get 7. Okay, now from the upside this whole pair comes down, so 0 4. नाउ वट एवर क्वेश्चन इज देयर 4, सो इसका हमें डबल कर देना है. 4 2 जा 8, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर 8. नाउ हमें आंसर 705 चाहिए, तो हमें क्या करना है. 8 से 8 के यहाँ पे कौन सा नंबर ले. अगर हम 1 ले तो 81, सो 81 1 जा 81, 81 सॉरी 82 2 जा. यहाँ पे जो भी नंबर ले वही नंबर यहाँ पे लेना है. यहाँ पे जो नंबर ले वही यहाँ पे आना चाहिए. तो 2 2, 82 2 जा, 83 3 जा, 84 4 जा, ऐसे. ओके, सो इफ यू डू 82 2 जा, सो वी विल गेट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 83 3 जा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 83 4 सॉरी 84 4 जा 4 4 जा 16, 1 carry, 8 4 जा 32 plus 1. Now 85 5 जा 8 5 जा 40, 86 6 जा 87 7 जा 88 8 जा. So we will get 704. So here we want 704. So 88 8 ja. So here we have to write down 88 8 ja. So we can say that इसका square root it will be 48. Okay, 48 होगा. मीन्स 48 का स्क्वायर करेंगे हम तो होगा. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज 4489. सो लेट वी विल स्टार्ट मेक द पेयर. Okay, now 5 5 are 25, 6 6 are 36, 7 7 are 49, 7 7 are 49 is the larger, so we have to take 6 6 are 36. Now subtraction 44 minus 36, so 8. Now from upside 89 will becomes down 6, so इसका multiply by 2, 6 2 जा 12. ओके, हियर 1 2. अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर हमें लेना है. वो कैसे, हमने जैसे यहाँ पे किया था 121 1 जा 121, 122 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 122 123 3 जा 124 4 जा.
So we will get 889. 1 2 7 7 ja. So we understood, if we do square of 87, so we will get 4489. Otherwise 4489 square root is equal to 87. Okay, now third one. Okay, 6 6 are 36, it is bigger, so 5 5 are 25. 5 are 25. Subtraction, 34 minus 25, so it will be 9. From upside, 81 will be come down. 5 2 are 10. Okay, now 101 1 ja 101, 102 2 ja 204. So we will get 981, 1099 ja. So we have to write here 1099 ja. So if we finding the square root of 3481, so we will get 59. Next sum. ओके, 2 की पेयर अभी एक सिंगल ही बचा है, तो एक पेयर बना देनी है. सो एक पेयर है तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 तो बढ़ जाएगा, सो 2 2 जा 4 वी हैव टू टेक. 2 2 जा 4, अब 41, 41 1 जा 41, 41 2 जा 82. Or sorry, not like this. Here my mistake is there. 41 1 ja 41, 42 2 ja 43 3 ja 44 4 ja. Sorry, here we got the answer 43 3 ja. Okay, sometime you will be make the mistakes like this. Okay, so don't do mistakes like this. जैसे मैंने अभी की मिस्टेक, ऐसे आप एग्जाम में मत करना. So here I explained you the four sums that are from exercise 6.1. So 6.1 question number 1, total 12 sums are there. From this 12, 1 2 3rd and 4th, total 4 sums I already explained you. Remaining all sums you have to do by yourself. Okay, so next question number 2, find the number of the digit in the square root of the following. इसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो कितने डिजिट्स का आएगा, तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी पैर. ओके, इसका आंसर चाहिए तो हमें पैर बनाने पड़ेगी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी पैर बनेगी, एक की पैर बनेगी, तो इसका आएगा 1. इसके यहाँ पे 2 पैर बनेगी, या तो इसका आंसर आएगा 2 में 2 3 3 मीन्स इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट का होगा, इसका 2 डिजिट का, इसका 3 का, इसका 3 डिजिट का होगा स्क्वायर रूट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the square root of the following decimal numbers. No problem, let me find out. Same thing, make a pair. 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 लेना पड़ेगा हमें. Now subtraction, 2 minus 1 1, from upside 5 6 will become down. 1 2 जा 2. Now 21 1 जा 21, 22 2 जा 44, 23 3 जा 22
So we will get here 156, 26 6 ja. Here dot is there, यहाँ पे मैं dot रख देना है. So answer will be 1.6. Now the second one, 7.29. पेयर बना दो. 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 7 minus 4 3. From upside 2 null will become down, 2 2 जा 4. Okay, 41 1 जा 41. डायरेक्ट हम 45 5 जा कर देते हैं फ्रेंड्स. Forty-seven 7 ja. So we will get answer 2.7. Okay, so here total friends 5 sums are there. So from these 5, 1 and 2 I already explained you. So remaining all sums you have to do by yourself. Okay, same, but we have to just consider a decimal, but otherwise the whole process is same. Now the next is question number 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers as to get the perfect square. Okay, so same thing we have to apply over here. Okay, from this I will explain 1 and 2. Will see. So let me find 402. So same thing, long division method. Okay, 2 2 ja 4 0. Okay, from outside 0 2 will become down. So here 2 is a remainder. So if we subtract 2 from the 402, 400. So this one is the perfect square. Okay, so this one is the perfect square of 20. 20 multiplied by 20. So we will get 400. Okay, so we have to subtract 2 from this. Remainder जो आती है वो हमें subtract करनी पड़ेगी. Okay, now the next second one, that is the 1989. So we will see how to solve this sum. Make the pair of 2 2. 4 4 is the 16. Yes, we will apply 4 4 is the 16. 9 minus 6 5. From upside 89 will become down. 4 2 is 8. ओके, यहाँ पे 8 है तो 81 1 जा 82 2 जा ऐसा करना है और 589 तक जाना है. ओके, सो ऑलरेडी हमने आगे किया हुआ है सब में. यहाँ पे हम देख लेते हैं 81 1 जा 82 2 जा. हमें क्या लाना है यहाँ पे आंसर 589. सो ये है तो 589 से बढ़ जाएगा तो 86 6 जा 516 लेना पड़ेगा. 86 6 जा 86 6 जा 516. Okay, 9 minus 6 3, 8 minus 1 7. So if we subtract 73, so 73 is a remainder. If we subtract 73 from 1989, so it will be the perfect square. Friends, here a little bit mistake is there. 9 minus 6 I consider 5 by mistake. 9 minus it is 3, it will be 3. Okay, so 389. So here we have to consider 389. So 389 will be we cannot take 85 5 ja. So 84 4 ja 336. 84 4 ja 336. 84 4 ja 336. Okay, I'll do it over here. 6. 9 minus 6 3. 8 minus 5 5. So 53 will be the remainder. So if we subtract 53 from this, so we will get 6. 8 minus 5. So we will get 1936, or we have to find the square root of 1936. So we will see how to find out. Make 2 pair. 4 4 is 16. 9 minus 6 3. From upside 36 will become. Now here 4 2 is 8. So in the table of 84 4 is
326, 336. So it is the square root of 44. So what we have to subtract? So subtract 53 and the answer will be 44. Means 44 का square करेंगे तो हमें मिलेगा. Okay, so this way you have to solve the problem. So remaining sums you have to do by yourself. Okay, let I will show you remaining total 5 sums, 1 and 2 solved by me. Now question number 5. So question number 5, 6, 7, 8, 9 we will see in our next video. So here we stopped our lecture. Thank you everyone. Have a nice day.